Hello guys, welcome to today's session in Concept. Today we will be learning about how you can trade when you are near to expiry or when you are far to expiry, right? Now before starting the video, if you are new here, you can go in the description. There is a link below. With the help of that, you can download and install the Concept web application. After successful registration, you will get some free 25 tools here that you can use for your trading. Okay. Also in the application we have a learn section. So in the video library you will get a pool of videos, multiple videos based on Pro Plus tools as well as on strategies, right? So these videos are available in multiple languages as well. For example, English, Hindi, Gujarati, Marathi and Tamil, right? So you can set your preference, and at any point of time, if you guys are having any kinds of doubts or query related to the videos or application, right? So you can go in the support section. Just wait. You can go in the support section, and here you will get our contact number and email ID. So you can contact us and we will be there to sort your queries out. Right. So let's start today's session. That is how you can trade when you are near to expiry and when you are far to expiry. Right. So there are various strategies. So we will be working on that today. Okay. Now let me open my Blackboard here. Right. Okay. Now there are two scenarios. The first one is when you are near to expiry. Right. And the second scenario is when you are far to expiry. Far to expiry. Right. Okay, when you are near to expiry, okay, so first of all we will discuss when you are far to expiry, right? Okay, so for example when you are far to expiry, so the question is far kya hota hai? Either it is 2 days, 3 days, 4 days. So if we are talking about the weekly days, weekly expiry, if we are talking about weekly expiry, right? So for example the Friday, okay, Friday, then Saturday, Sunday is your holiday जो आपकी होती है, and then Monday. Okay, Monday. Now Friday से लेके Monday will be your far to expiry. ठीक है, far जो आप expiry काउंट कर सकते हो. Now इसमें जो Saturday Sunday होता है, it is also counted. Why? Because the premium decay जो होता है वो काफ़ी fast होता है on Saturday Sunday, right? Because 2 दिन एक साथ आ जाते हैं आपके और आपका premium decay रुकता नहीं है. Even if your market stops, but there will be premium decay. राइट तो थीटा आपका यहाँ पे डिके होता रहता है, बट स्टिल फ्राइडे टू मंडे यू कैन काउंट इट एज योर फार टू एक्सपायरी. सो एट दैट टाइम देयर विल बी सर्टेन थिंग्स, राइट? फॉर एग्जांपल द वेगा विल बी इन योर साइड. वेगा जो होगा आपका हाई होगा बिकॉज यू आर फार फ्रॉम द एक्सपायरी, राइट? सो इफ द वोलेटिलिटी भी इंक्रीज, वोलेटिलिटी अगर इंक्रीज होती है सो योर प्राइस विल इंक्रीज एट दैट मोमेंट, राइट? सो इफ द वोलेटिलिटी इंक्रीजेस सो द प्राइस विल इंक्रीजेस. सो इस टाइम पे यू कैन गो विद द एटीएम प्राइस पे आप जा सकते हो. यू कैन ट्रेड विद द एटीएम, राइट? एटीएम जो स्ट्राइक प्राइसेस है, और यू कैन गो वन डाउन टू ओटीएम पे भी आप इस टाइम पे ट्रेड कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में. ठीक है, थोड़ा आपके पास रिस्क कम है. वेगा इज इन योर साइड. थीटा डिके होगा बट नॉट दैट मच जितना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट? सो इस टाइम पे द थीटा आपके इतने फेवर में तो नहीं रहेगा, बट यू कैन से यू कैन ट्रेड विद इट, राइट? तो एक चीज ये है. इफ यू टॉक अबाउट डेल्टा, ठीक है, तो डेल्टा जो है, तो डेल्टा विल बी आपके यहाँ पे जो डेल्टा रहेगा तो एटीएम प्राइस पे, इफ यू आर ट्रेडिंग एट एटीएम प्राइस सो दैट विल बी 0.5 वहां पे रहता है. इट मींस यू हैव टू ट्रेड इन द एटीएम बिकॉज वेगा इज ऑल्सो ऑन योर साइड. ठीक है, अब डेल्टा 0.5 है, इट मीन्स देयर आर 50% चांसेस दैट द प्रीमियम विल एक्सपायर इन द मनी और 50% चांसेस द प्रीमियम विल एक्सपायर आउट ऑफ द मनी, राइट? तो एक चीज आपको इस पे भी ध्यान देनी है. ठीक है, तो ये चीजें होगी. बट व्हेन यू आर नियर टू एक्सपायरी सो एट दैट टाइम द फर्स्ट थिंग इज थीटा आपके फेवर में नहीं होगा. एज अ बायर, एज अ सेलर द थीटा इज योर फ्रेंड, थीटा विल बी इन योर फेवर. ठीक है, तो ये एक पहली चीज है. अब डेज कौन से होते हैं, तो हमने वहां पे मंडे कर दिया, तो देन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड जो आपका लास्ट थर्सडे होगा एक्सपायरी, राइट? सो दीज आर द 3 days व्हेन यू कैन से यू आर नियर टू एक्सपायरी, राइट? सो इन दिस टाइम थीटा विल नॉट बी इन योर फेवर. जो वेगा होगा तो वेगा की वैल्यू धीरे धीरे करके इट विल डिक्रीज और एक्सपायरी तक आपको देखने को मिलेगा कि वेगा क्या है, सॉरी. ठीक है, तो एक्सपायरी तक आपको मिलेगा कि वेगा यहाँ पे सबसे लीस्ट रहेगा. द वेगा विल बी इन इट्स लीस्ट वैल्यू. ठीक है, व्हेन यू आर नियर टू द एक्सपायरी, राइट? सो व्हाट विल यू डू एट दिस टाइम? जस्ट गो फॉर द आईटीएम प्राइस. ओके, जस्ट ऑलवेज गो फॉर द आईटीएम प्राइस. इन द मनी प्राइस पे जाओ बिकॉज ओनली इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस देयर विल बी अ गुड इंक्रीज ऑफ प्रीमियम एज वेल, राइट? Now when we talk about IV, it is very important factor when you are near to expiry and far to expiry, right? Let me explain how.
Okay, so for example, you are analyzing IV, that is your implied volatility. IV, that is your implied volatility, right? Now, when I am analyzing implied volatility, right? So implied volatility when I am far from the expiry and when I am near to the expiry, right? So IV, what will happen to the IV, right? So when I am far from the expiry, right? So as a buyer, what I want, as a buyer, I want IV, good IV implied volatility, right? Because if there is good IV, the IV is high, so at that time there is opportunity for me that my premium can go more in my side, right? So there will be a good momentum in the premium, right? So that is why I need good IV at that time, right? When I am near to the expiry, at that time I also want the good IV. As a buyer, I always want a good implied volatility in the market, right? Because of the momentum. But as a seller, if I am far to the expiry or near to the expiry, right? So what I want the IV to be low. Implied volatility market में जितनी ज़्यादा रहेगी, as a seller I'll enjoy the decay of the premium. ठीक है? I hope कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट? अब इसी को एक चीज से मैं समझाता हूं. लेट मी क्लियर इट विद द एग्जांपल, राइट? सो आई एम ओपनिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हियर एंड इन द एनालाइज सेक्शन वी हैव IV सेक्शन हियर, राइट? सो आई विल गो ऑन द IV एंड HV हिस्टोरिकल, राइट? मैंने इसको ओपन कर लिया. नाउ आई विल क्लिक ऑन द IV माइनस HV, right? So it is a graph, as you can see, some bars in green, some bars are red in color, right? How to analyze it? So there is a very simple thing, right? How? Just look at this chart. Okay, now as I have said, there are some bars which are red in color, some bars which are green in color, right? You can say. Okay, now when we are looking at the price, this is the price, okay, that is moving along with the implied volatility, right? Now what happens at any point of time, if you can see there are red bars in the market. So what this suggests, red bars, right? So as you can see right now, we are looking at implied volatility minus HV, right? So IV minus historical volatility, right? It means the IV, that is the forecasted momentum, and HV, that is the historical, the volatility that we can see, that we can analyze from the past data, right? So if my implied volatility is greater than historical volatility, it means the market can be in the momentum, right? So at that time we will see some green bars here, right? We can see some green bar here, and the green bar suggests that there will be a sideways market. Simple, right? Now at any point of time, if my IV minus HV, okay, so at this time, if my historical volatility is greater than the IV, it means the market is much volatile than it is expected to be, right? So जो आपके sellers हैं, उन्होंने IV को कम रखा हुआ है, but in the history we can see this stock or this asset, या जो भी आपने indices लिया है, this has much capability of volatility, right? तो अभी के जो sellers हैं, उन्होंने market को कम आंका हुआ है, right? So जब भी my historical volatility will be greater than IV, so at that time you can see there are red bars in here in the chart, okay? And whenever there is a red bar, then you can see in the market, there is a very good momentum, ठीक है? And whenever there is a green bar, at that time you can see some sideways momentum is there, right? Then you can see in the red bar also, so there was a good momentum, right? Here also, right? When there is a green bar, so you can say a sideways market, right? So this is how you can analyze the chart with the help of IV and HV. So that is your historical volatility and implied volatility, right? Now then we have a option here, just a second, change. Okay, then we have an option here, that is IVR and IVPH. Now what this suggests, so IVR, I have told you a lot of times, IV is the implied volatility ranking, right? IV is the implied volatility ranking, that it is written here, and IVP, that is the percentile of the historical IV, right? I can also see my IVR, my IVP and IV, right? Now how to analyze your market with the help of this? अभी ये चार्ट है, let it, इसको छोड़ दो, इसको मत देखो, because it will be confusing. अभी मैं अगर मैं इसमें लेके जाऊंगा, because there are so many lines here, but you can just look at this tabular chart, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो इन नंबर्स पे. Now what happens? अगर मेरा implied volatility ranking increase हो रही है, it means my implied volatility is getting stronger and stronger by the day, ठीक है? As comparison to the historical volatility. So if my implied volatility जो forecasted है, if that is getting stronger, it means there are chances that the market can be more volatile, ठीक है? मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है, बट
अगर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है और उसकी रैंकिंग काफी ज्यादा है, इट मींस देयर विल बी सम डेज आने वाले मार्केट में, कल या परसों, दिस वॉलेटिलिटी कैन कूल डाउन. सो इफ अगर मेरी IVR इज हाई, सो एट दैट टाइम व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर द शॉर्ट साइड, आई विल गो फॉर द सेलिंग साइड, राइट. तो उस टाइम पे आई विल नॉट गो विद द बाइंग साइड. दैट इज द सिंपल थिंग, एज सिंपल एज आई कैन टेल यू, ठीक है, कि IVR अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, सो एट दैट टाइम यू जस्ट हैव टू गो फॉर द सेलिंग, यू डोंट हैव टू गो फॉर द बाइंग साइड. एक बात देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि हमें रीडिंग सही मिल रही है नहीं, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो मेरा यहाँ पे 35 से यू कैन सी माय IVR जस्ट डिक्रीज डाउन, ठीक है. तो 35 से 17 चले गया, राइट. तो माय IVR डिक्रीज, रैंकिंग डिक्रीज हो रही है, बाइंग ऑप्शंस मेरे मार्केट में बढ़ जाएंगे, ठीक है. तो अगर मेरे बाइंग ऑप्शंस बढ़ जाएंगे तो आप देखो IVR, ये तो रैंकिंग बता रहा है ना, तो यू कैन ऑल्सो से 16 से 12 चले गया, ठीक है. अगर 16 से 12 चले गया, सो एट द टाइम क्या होगा, देयर विल बी सम बाइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मी, मेरे लिए वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है. तो 24 से 25 के बीच में मैं एक बार देख लेता हूं क्या क्या चार्ट में था, ठीक है. सो लेट मी जूम इट आउट अ लिटिल, ठीक है. व्हाट इज 20 which was that, let me confirm it again. So it was from I guess 24 to 25 I guess ना, it was okay. So I think I have analyzed it wrong, ठीक है. मैं चलो फिर से एक रीडिंग निकाल लेता हूँ, ठीक है. मैं भूल गया मैं रीडिंग कहाँ पे थी, ठीक है. तो लेट्स एनालाइज. माय IVR रैंकिंग डिक्रीज्ड फ्रॉम, so it decreased from, you can see here, my IVR decreased from, okay, I can analyze it from 32 to 23 on 14th August. Okay, the 14 and 16, I'll take the example of 14 to 16, right? 14 to 16th August. So let's see where is 14 to 16th August. It is right to 14 to 16th August. 14, this is 12, then this is 13, and this is 14, right? So I can see जब मेरी implied volatility ranking was increasing, so at that time my IV was also decreasing, sorry, ठीक है. और when my IV was decreasing, so this blue one, this line is my future price. So you can see there is a significant rise, you can see there is a significant rise in my price, okay. और उसके बाद my price started increasing, right? तो अगर मेरा IVR गिर रहा है, सो एट दैट टाइम व्हाट आई फील कि अब मार्केट कूल डाउन हो रहा है और अब मार्केट वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है. नाउ इट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गो इन द बाइंग साइड, राइट. सो एट दैट टाइम माय फ्यूचर प्राइस, यू कैन ऑल्सो सी फ्यूचर प्राइस वाज ऑल्सो इंक्रीजिंग, राइट. सो आई हैव सिलेक्टेड अ रैंडम एग्जांपल. पहले वाला एग्जांपल जो था मैं वो भूल गया था, मैंने कौन सी डेट सेलेक्ट करी थी. बट नाउ एज यू कैन सी वी गॉट अ गुड रीडिंग हियर, and that is how you can analyze and use IV in your chart when you are near to the expiry and far to the expiry as well, right. So I hope guys आपको मजा आया होगा, आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी. If you like the video, ठीक है, आप इसको लाइक कर सकते हो, you can share with your friends, you can comment your views in the comment section. Thank you so much. If you are new to the channel, you can subscribe it also. This is your trainer Ankit Singh Rawat. Have a good day.